Okay, so Assalamu alaikum everyone. Today we will be discussing GT7. This GT had 45 questions and 45 minutes for it, and obviously, technically speaking, we have one question for every question over here. तो इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चन हैं इनको हम लोग वॉक थ्रू करने की कोशिश करेंगे. इनका जो डिस्कशन है ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे. So question number 1 till 10 we have grammar questions. So if you look at question number 1, it says during flight the combination of low air pressure and humidity in aircraft cabins reduce the sensitivity of our taste buds for salt and sweet by up to 30%. Now, the first thing that I see over here is the difference of reduce and reduces, right? So I have to first decide that whether I have to use reduce or reduces. So as per the rule of preposition, whatever is written before the preposition tends to become a subject of the sentence, right? So what we have written just before the preposition is combination, right? So combination, because it is singular, we will eliminate all the options that pertain to a plural subject, right? So हमें पता है कि अगर हमारा subject plural होता है तो उसके साथ s नहीं आता, और अगर उसके वर्ब के साथ s नहीं आता, और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो उसके वर्ब के साथ ses या ies आता है. ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट. नाउ इन द रिमेनिंग 3 ऑप्शंस बी, सी एंड डी, और इन ऑल दीज ऑप्शंस वी हैव रिड्यूसेस. तो मतलब ये मसला नहीं है. अब आगे कोई और प्रॉब्लम होगी. वो प्रॉब्लम क्या है? तो अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इसके अंदर, तो ये 2 अप टू ये हैं और 2 अप टू ये हैं, यानी वी हैव टू डिसाइड कि हमें इन दोनों के बीच में स्पेस लेना है या नहीं लेना. तो बिकॉज हमें ये 2 अलग वर्ड्स हैं, अप एंड टू, दीज आर 2 सेपरेट प्रपोजिशंस, तो इन दोनों के बीच में इसीलिए स्पेस होना जरूरी है. ठीक है, दिस इज नॉट अ सिंगल वर्ड, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाता है. अब बचता है सी एंड डी, एंड सी एंड डी के अंदर अगर हम टेक्निकली जो डिफरेंस है अगर हम उसको देखेंगे तो एक में 2 लिखा हुआ है और एक में 4 लिखा हुआ है. नाउ व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन, राइट? सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन, that reduction will take the original amount to somewhere. सही है. 4 का मतलब तो possession हो जाता है, right? कि possession, या अगर हम ऐसे बात करें कि 30% के लिए तो नहीं कर रहा, वो 30% तक चला जाता है. सही, that is how it is going about, right? So it is not 4 will be incorrect over here, and henceforth D will be also eliminated, and the answer to this question will be option C. Okay. Now let's move on to question number 2. Question number 2 says, now this is one of the trickiest questions related to subject verb agreement that we have. Now normally बच्चों को ये पता है कि जब भी हमारे पास normally questions के अंदर one off आ जाता है तो उससे related जो भी verbs होते हैं या उस sentence में जो verbs होते हैं उनको हम singular कर देते हैं, and that is where the examiner gets that window or that opportunity to play with you guys. Okay, जब हमें पता है कि वन ऑफ आ सकता है या वन ऑफ आता है तो उसके लिए जो वर्ब है वो सिंगुलर होता है, तो वी नीड टू कीप इन माइंड कि सिर्फ उस वन ऑफ के लिए जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा, सेंटेंस के सारे वर्ब्स सिंगुलर नहीं होंगे, राइट? सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो अकर लिखा हुआ है, अकर्स लिखा हुआ है, दिस इज राइट आफ्टर दैट, राइट? तो दैट क्योंकि एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो इट हैज टू बी फॉर व्हाटएवर इज रिटन बिफोर दैट. तो इसका मतलब ये जो अकर है ये तो प्रॉब्लम्स के लिए है, तो अगर क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारा प्लूरल है तो ये अकर्स तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए सबसे पहले तो हम ऑप्शन ए को और बी को एलिमिनेट कर देंगे. तो जब ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो गया तो वी आर लेफ्ट नाउ विद ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, और इन दोनों के अंदर हमें चेक क्या करना है कि वन ऑफ के लिए जो वर्ब आ रहा है वो सिंगुलर है या नहीं. तो ऑप्शन सी के अंदर क्योंकि ये आर लिखा हुआ है इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, और ऑप्शन डी के अंदर क्योंकि ये इज हमारे पास आ गया है इसलिए वी विल टेक इट एज आवर आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. So this was subject verb agreement and this was also subject verb agreement. Question number 3 is conditional sentence, right? And conditional sentences के अंदर भी जो subjunctive mode होता है, right, जिसके अंदर हम कोई ऐसी बात करते हैं जिसका असल में होना मुमकिन नहीं है, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जब भी आप कोई ऐसी बात करो जिसमें उसका होना मुमकिन ना हो, कोई भी ऐसी बात, जैसे मैं कह दूं कि अगर मैं आपकी जगह होता
तो मैं ये काम कर लेता, तो हो सकता है कर लेता, लेकिन मैं आपकी जगह ना हो सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें इफ के साथ वर आना लाजमी है। तो देयर आर ओनली टू ऑप्शंस जिसमें इफ के साथ वर है, दैट इज बी एंड सी। तो मतलब ए और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब बच रहा है कि भाई बी और सी में आंसर क्या होगा। तो जब भी इफ के साथ वर आता है तो सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है, वन ऑफ द फोर कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप्स दैट वी हैव, तो जो दूसरा पार्ट है उसमें या तो वुड आता है, या कुड आता है, या माइट आता है, या वुड हैव, कुड हैव, या माइट हैव आता है। तो इसका मतलब मैं ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट करूंगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे विल लिखा हुआ है, और इसलिए यहाँ पे आई वुड की वजह से मेरा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. If I move on to question number 4, what it says is, of all the suggestions received. Now, one thing that I have to remember is this number is all, right? और क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि वो स्पेसिफिकली 2 की बात कर रहा है, तो all का मतलब obviously we will be taking as more than 2, right? So of all the suggestions received, his were more practical and cost effective, right? तो ये यहाँ तक तो बात ठीक है कि हिज, आप हिज से अगला सेंटेंस स्टार्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सजेशंस की बात कर रहे हो तो दोबारा से सजेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोर गलत है, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 2 सजेशंस, और उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं हो सकती, और जो ओरिजिनल सेंटेंस है उसके अंदर भी मोर लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी विच इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये दो ऑप्शंस हमारे पास से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बच रहा है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन बी के अंदर भी यही मसला है कि इसमें मोर लिखा हुआ है। सो द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव दैट हैज इन इट मोस्ट, वो सिर्फ ऑप्शन सी है, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया कंपैरिजन। ऑलराइट, मूविंग ऑन, माय मदर बॉट आइसक्रीम for my brother and me, but she didn't buy one for herself. Now, जब भी हमारे पास किसी सेंटेंस में कोई प्रोनाउन आ जाए, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ये चेक करें कि उसके लिए वर्ब मौजूद है या नहीं, बिकॉज प्रोनाउंस डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्ब, they tend to change, right? So the verbs, if you look at the verbs in this sentence, the first verb is what, जो कि मदर के लिए है, उसके बाद है फिर didn't buy, वो शी के लिए है। तो पता ये चला कि ब्रदर एंड मी के लिए कोई वर्ब मौजूद नहीं है। तो क्योंकि ब्रदर एंड मी के लिए कोई वर्ब मौजूद नहीं है, तो एनी ऑप्शन दैट हैज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन विद माय ब्रदर विल बी एलिमिनेटेड, राइट? क्योंकि रीजन क्या है कि उसके लिए सेंटेंस में वर्ब मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम ऑप्शन सी को और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर देंगे। अब बच रहा है ऑप्शन ए एंड बी। अब ए एंड बी में बी का मसला ये है कि यहाँ पे माई सेल्फ आ रहा है, राइट? तो माई सेल्फ क्योंकि एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो इसलिए हम इसको भी एलिमिनेट करेंगे एंड वी टेक ए एज आवर आंसर। अगर यहाँ पे मी के लिए कोई वर्ब होता तो फिर हम इसको आई कर देते। ये वाली बात अगर समझ में नहीं आई है तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो बैक एंड listen to the explanation of this question again, okay? For every subject pronoun we need to have a verb in the sentence, and for every object pronoun we have to make sure that we do not have any verb in the sentence, okay? All right, so moving on, question number 6. Question number 6 says, on March 15, 2006, the Maywood Recreation Department requested a grant from the state to rebuild the community center that dash in the recent fire. Now, the first thing that we need to understand over here is that the part of the sentence that is before the blank has requested in it, right? तो अगर इसके अंदर requested है तो उसका मतलब ये है कि सेंटेंस प्रेजेंट में या फ्यूचर में नहीं हो सकता। तो बाकी अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो A is present, B is future, future perfect, and D is again present, present perfect। तो ये तीनों उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे जो हमें चाहिए।
henceforth by default हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, had been destroyed. Okay, चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में मैथ्यू मॉरिस एंड जेसिका ग्लासमैन hosted a holiday party that the riverbank cafe dash, right? So अब यहाँ पे भी आप अगर गौर करो, so the sentence that is the part of the sentence that is not underlined has a verb that is in past tense. ठीक है, तो हमें ये verb tense consistency को maintain करना पड़ेगा, और verb tense consistency को maintain करने के लिए we need to have a verb that is again in past tense. So caters again is present, will cater is future, is catering is present continuous. So there is only one option, that is past, right? So the answer to this question again will be D, dog. Okay, so moving on, question number 8. The woman who confronted the owner of the unleashed dog dash angry. Again, it is a similar question, right? All of these questions that are fill in the blanks are more often than not somehow related to tenses. So again, because this is past tense over here, right? So we have to select a tense that was past again. And यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन हैं जो कि पास्ट में हैं, एक है वर एंड एक है वॉज. एंड बिकॉज आप वुमेन की बात कर रहे हो और सिंगुलर की बात कर रहे हो, इसलिए ए आंसर नहीं हो सकता, तो बी होगा. तो दिस इज टेंस प्लस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ओके, सो आपका आंसर इसमें बी हो जाएगा. द बॉय डैश द बैट एंड रैन टू द फर्स्ट बेस. सो दिस इज एंड हमें पता है अकॉर्डिंग टू पैरेलल स्ट्रक्चर कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट आ जाए जो कि एंड से हमें पता चल रहा है, एंड एक मार्कर है, तो एंड से पहले और बाद में जो भी टेंस लिखा हुआ है इट शुड बी सिमिलर, राइट? तो क्योंकि एंड के बाद रैन लिखा हुआ है जो कि पास्ट है, तो एंड से पहले भी पास्ट होना चाहिए. तो स्विंग्स नहीं हो सकता, स्विंग भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट हैं. स्विंग कोई वर्ड ही नहीं है इसलिए बी भी नहीं होगा. एंड स्वंग इज क्योंकि पास्ट, इसलिए सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, राइट? सो दिस इज टेंस प्लस parallelism. Okay, now moving on to question number 10. There dash 4 excellent restaurants in the center of the town, right? So because you're talking about 4 excellent restaurants, you're not talking about one excellent restaurant, तो एक चीज तो क्लियर है कि आपका आंसर इस भी नहीं हो सकता और was भी नहीं हो सकता, right? and being obviously ना दोनों में से कुछ भी नहीं बता रहा, इसलिए बेस्ट आंसर आपके पास यहाँ पे आर हो जाएगा. अगेन दिस कैन बी ऑफ subject of agreement and to some extent with it of tenses as well, right? All right, so now we are moving on to the reading passage, and I will be assuming that all of you guys have already read the reading passage, right? और ये ध्यान में रखते हुए ही मैं इसको फिर इसका स्टार्ट करूंगा, ठीक है? So the first question for the reading passage is that the author mentioned the age of the late 16th century, most probably to. So if we read what is happening where the author is mentioning the 16th century, this is in the third line of the first paragraph, right? So he says the late 16th century was a time of upheaval. Cosmology was being redefined, the new world order, the new world was colonized, the new stars. Now that was the start of these technologies, right? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे लेट 90s के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर एक अपहीवल था, राइट? तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड ये सारी चीजें इन्वेंशंस थी, आगे बढ़ रही थी. तो इसके अंदर जो भी लोग आए और जो भी लोग इन्वॉल्व हुए वो लोग ऑटोमेटिकली दे बिकेम अ पार्ट ऑफ इट, और वो आगे बढ़ना शुरू हो गए और वो आगे बढ़ते चले गए, ठीक है ना? तो that is how it is, right? So if you look at the options, right? So option A says highlight that late century was a time of great disturbance. No, indeed it was not. Okay. Option B says point out the time in which science and magic were close. Because the author has clearly said
that science and magic have always been closely related. It's just that in this century they started discovering this fact. Okay, so this is not something that they thought. Highlight the era of some prominent researchers. Yes, we can take that as our answer, but this is not specifying कि ये किसकी, मतलब वो रिसर्चर तो फिर किसी भी चीज के रिसर्चर हो सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पैसेज में तो जिस चीज की बात की गई है वो तो स्पेसिफिकली जो मैजिक और साइंस से रिलेटेड रिसर्चेस हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए अभी राइट नाउ I am not taking it as my answer, but I'll come back to it if I do not find anything that is better than this. Okay. Call attention to events that might lead John D to his interest in magic. Yeah, this can be the answer. Identify the age at which new stars and comets start appearing in sky along with some of the other events. बिल्कुल irrelevant है ये। डी आपका आंसर बिल्कुल हो सकता है क्योंकि 16th सेंचुरी के अंदर, क्योंकि ये सारी चीजें जाहिर सी बात है कि यार अगर एक चीज डिस्कवर ही नहीं हुई तो उस चीज के अंदर मेरा इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। इंटरनेट में लोगों ने इंटरेस्ट तब लिया जब वो डिस्कवर हुआ। स्मार्टफोन्स के अंदर या उनको बनाने के अंदर लोगों ने इंटरेस्ट तब लिया जब वो डेवलप हुआ। तो एक चीज जब डेवलप होती है या उसकी जब रिसर्च होती है तो ही वो उसमें इंटरेस्ट लिया जाता है। तो क्योंकि 16th सेंचुरी के अंदर ये सारी सर्चेस चल रही थी और लोग इसमें मुस्तकिल कोशिश कर रहे थे, इसीलिए जॉन डी बिकेम वन ऑफ द रिसर्चर्स जिसने इसके अंदर इंटरेस्ट लिया, एंड दैट इज डी। व्हाई डी इज द मोस्ट एप्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी ओवर हियर। ओके, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. According to the passage, which of the following is true? Okay, so question number 12 is saying ये true false का question है। Prominent researchers such as Tylo Brahe, Nicholas Koch, इस तरह के नाम आ जाए तो उनको XYZ कर दिया गया, XYZ were more interested in mystical activities than orthodox scientific pursuits. No, he's talking about John Dee. He was more interested. Although John Dee tried multiple times, but he failed to connect with the spirits. No, बहुत clearly mentioned है कि John Dee was communicating with the spirits through a medium called scryer, and the medium is mentioned. तो failure का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। Although John Dee tried multiple, तो ये भी आंसर नहीं होगा। D was expert authority in the fields such as navigation, cartography and cryptography. ये तो ठीक है, लेकिन बाकी दो मेंशन नहीं है। D was wrongly accused of interfering with devilish forces. I think he was not accused, and he was doing all of that, right? D spent the majority of his life in attempts and experiments to contact with mystical forces. Yes, it is very clearly mentioned over here. We can see it in this line towards the end of the paragraph, the second paragraph, in which he communicated with the spirit through a medium called scryer who spoke on their behalf. ठीक है, तो इसलिए D is the best answer. The passage answer all of the following questions except, देखें, how science and magic are related, यहाँ से तो बात शुरू ही हुई है, सही है। तो except में तो जो passage में नहीं है वो आपका आंसर होगा ना। Why the time of late 16th century was disrupting, ये बात भी हुई है कि वहाँ पे नई नई चीजें डिस्कवर हो रही थी। Why John Dee established a library, ये बात भी बहुत clearly mentioned है because he was a researcher and he was doing all of those things. Why Dee used Edward Kelly for his mischievous purposes, ये भी लिखा हुआ है। How Dee flourished the magic, and तो ये चीज नहीं लिखी हुई, ये बात ही स्टार्ट यहाँ से हुई है कि he did flourish all of these methods and he was doing all of them successfully, and he was performing all of these successfully। कैसे उसने उसको फ्लरिश किया ये बात नहीं लिखी हुई, ठीक है, इसलिए D will be my answer। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। तो which of the following can be inferred from the passage? अब देखें, इन्फेरेंस का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली तो आपको ये नहीं मिलेगा पैसेज में, लेकिन कुछ ना कुछ हिंट आपको पैसेज में इसकी मिल जाएगी, ठीक है। Science and magic were once closely related but are not anymore. I cannot infer this from the passage. Okay, so this will not be my answer. D started conducting magic experiments in his youth. ये है बिल्कुल passage के अंदर, और ये कहाँ है passage के अंदर, ये आपको मिलेगा over here. He was also learned in cryptography, astronomy and optics, nasal science. He was struck by accusation that he was meddling with diabolical forces.
from his undergraduate days at the Cambridge, right? So this is what the answer is, and that is why over here the answer will be B, right? तो वो undergraduate यानी एक बहुत young age से वो ये काम कर रहा था. Okay, so question number 15 and question number 15 we have the primary purpose of the passage is अब obviously जब आपके पास primary purpose का सवाल आ जाए ना तो you need to remember this कि the answer to a primary purpose question will always be an answer जिसके ऊपर पूरे passage का एक premise खड़ा होगा, ठीक है ना, पूरे passage का premise खड़ा होगा. तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर. कोई भी ऐसी चीज जो पैसेज की बाहर है या सारी बातें जो मतलब कोई भी ऐसी चीज जो पैसेज को मिस कर जाए वो भी हमारा आंसर नहीं होगी. ऑप्शन ए को देख लें, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड मैजिक, ये तो बिल्कुल हुआ है. विद द हेल्प ऑफ 16th सेंचुरी केस स्टडी, ये भी हुआ है. ऑफ जॉन डी, बिल्कुल ठीक है. तो तीनों चीजें ये लग रही हैं और बारी बारी इसी के ऊपर बात हुई है, इसलिए आई वुड गो विद ए एज माय आंसर. बाकी ऑप्शंस को भी मैं देख लूंगा. Highlight the impact of dwindling 16th century on science and magic with the help of a case study of. No, इसमें relationship की बात नहीं हुई थी, impact की बात हुई है. Summarize, इसलिए ये आंसर नहीं होगा. Summarize the mystical activity of John Dee in the late 16th century. That is again a part of the passage, but that is not the central. देखो एक चीज इसमें याद रखना कि all of that is the part of your reading comprehension passage, is not the central idea of the reading comprehension passage. Okay, so again this cannot be the answer. Compile the events related to 16th century. Again, it's not talking anything about John Dee. Construct a comprehensive understanding of difference between science and magic. Again, it's not talking about John Dee, right? So A is the best of the answers that we have. Okay. Now moving on, the questions that we have from 16 onwards are of vocabulary. अब अगर vocabulary मेरी अच्छी है और इन questions के अंदर एक तो ये कि अगर मेरी vocabulary अच्छी है तो इन questions को करने में मुझे time बिल्कुल भी नहीं लगेगा. I just have to mark the right answers, right? तो लेकिन ये कि अगर मेरी vocabulary अच्छी नहीं है तो मुझे time भी लगेगा और I may miss out on very important and easy marks as well. ठीक है, तो I would encourage all of you to go with a good vocabulary bank as much as you can. Obviously इतना हो सकता है उतना तो कर ही लें टेस्ट में जाने से पहले, ठीक है. तो you can check this as well, ठीक है. Prolific is basically abundant. Anything that is abundantly fruitful or in abundant quantity, that is prolific, ठीक है. Aplomb, basically the literal meaning of aplomb is self-confidence, but anything that is related to composure, coolness, poisoness, that will again go with aplomb, right? The literal meaning of wrath again is anger, right? So the answer over here will be A. All right. Apex again means something that is abundant, and mentor obviously cannot be the answer. Then you move on to sedate, and sedate is something of a mild temper, or someone who can stay with a similar temper, right, throughout. You come to valor. Valor obviously has to pertain to courage. Myopic is short-sightedness. That is why the answer is D. Inertia is the property of any object to stay where it is, right? So it will come under immobility. It's not mixed emotions. It's not a hostile person. It's not a hand tool. Inevitable is something that is unavoidable, right? Something that is unavoidable, or you may say that is inescapable, right? Felony or felon is not a good guy, someone of a
विलनस रूल और कोई विलन हो उसको आप फेलन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी ऑब्वियसली अ क्रिमिनल और अ depraved person, right? If you look at the other options, the rule of ordinance, no coin or coins of gold, no critical period of condition, no. Can uh, can is to pertain to, it can be related to a range of knowledge as well, right? And obviously when you have good knowledge, you are able to recognize things, you are able to understand things. Anything that is related to the recognition or the understanding or comprehension of anything, इस context में कोई भी मतलब अगर आप निकालोगे तो वो can की तरफ जाएगा। तो वो वही है, जो चार ऑप्शन हमारे पास हैं उसमें to recognize will be the best option that we may have, okay? Then we have murkiness, and murkiness is related to muddiness. So something that is, when the water is not clear because of the mud in it, that is when we call it the water is murky, right? It's not an overpaid, unpaid overdue debt. It's not a sharp flaw. It's not the appearance of water flowing resulting from sudden rain or melting snow. Okay. Okay, so now we move on to the sentence completion questions. Obviously, these questions, in questions के अंदर हमारे पास एक blank होता है and we have to fill it with the best option that we have. Okay, so we are starting with question number 27. Okay, so question number 27 says Ludwig van Beethoven was a musical dash playing his first professional concert at only 7 years old, right? So this is something extraordinary, right? If someone is doing such a large event at only 7 years old, this person has to be extraordinarily talented, right? So the word over here, he was a musical genius, right? This is the sort of word that we need over here. So he was not a musical hack, no, certainly not. He was not a musical phenomenon. He was not a musical spectacle. He was a musical prodigy, right? That is why the answer is D, because prodigy का मतलब यही होता है कि someone, who is extraordinarily intelligent or genius, especially at a very young age, right? That is why the answer to this question will be option D. Moving on to question number 28. Stephen's parents encourage him to pursue a dash career in medicine or law. They want to see him become rich and successful. Now, these are the two keywords. Sentence completion के अंदर खास तौर से keywords बहुत important होते हैं. अगर आप वो नहीं पकड़ पाए तो solve करना बड़ा मुश्किल होता है. Rich and lucrative से इसका मतलब क्या हुआ? वो कैसा career होना चाहिए? That makes him a lot of money, right? Obviously, it will not be a stressful career. It will not be a worthwhile career. It will not be a rewarding career because अच्छा ये भी एक मसला है. रिवॉर्ड की जो डेफिनेशन है उसमें हमेशा पैसे नहीं आते. सही है, रिवॉर्डिंग कुछ लोगों के लिए फ्री में पूरा दिन काम करना, लोगों को सर्व करना, दैट इज रिवॉर्डिंग क्योंकि वो इंट्रिंसिकली उनको बहुत रिवॉर्ड कर रहा होता है, राइट? बट व्हाट ही इज डिमांडिंग फ्रॉम हिज सन इज दैट द करियर शुड बी rich and successful, right? That is what he wants his son to be, right? So it definitely has to be lucrative. The answer over here will be D, because lucrative is something that is extremely profitable in terms of money, right? Not in any other terms, right? That is why the answer over here is D. C would have been a trick option if anyone went for C, तो फिर ये गड़बड़ है, ठीक है? Although Dina is dash about governor's re-election campaign, Carla regards it with dash, ठीक है? तो पहली चीज जो हमारे लिए कीवर्ड है वो क्या है? although, right? तो although से हमें ये पता चला कि पहले ब्लैंक, मुझे नहीं पता पहले ब्लैंक में क्या आएगा, इसमें x अगर आ रहा है और इसमें y आ रहा है, ये मुझे पता है क्योंकि ये दोनों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में है. दे बोथ हैव टू बी ऑपोजिट, राइट? अगर नीचे ऑप्शन में कहीं भी दो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ऑपोजिट नहीं है तो वो तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे, राइट? सो इफ वी लुक एट रेकलेस एंड कैलेस, ये पॉजिटिव तो नहीं है, दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, एलिमिनेट हो जाएगा.
एक्सूबरेंस कहते हैं एंथुजियाज्म को, एंथुजियाज्म भी वही है, तो ये भी सिनोनिम्स हैं, ये भी कट जाएगा। सो बी भी कट गया, डी भी कट गया। अपसेट एंड केयरलेसनेस दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो ये भी कट जाएगा। तो सिर्फ बाय अंडरस्टैंडिंग द यूजेज ऑफ ऑल्दो ओवर हियर वी गॉट टू द आंसर व्हिच इज पैशनेट एंड इंडिफरेंस। और इसको आप जब प्लग इन करोगे तो भी ये बिल्कुल ठीक होगा कि ऑल्दो डीना इज पैशनेट अबाउट द गवर्नर्स री-इलेक्शन कैंपेन, काला रिगार्ड्स इट विद इंडिफरेंस। ठीक है, क्योंकि एक पैशनेट है और दूसरा जो है वो इतना उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, राइट। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन फॉरेन लैंग्वेजेस आर इनकरेज्ड टू डैश देयर स्टडीज बाय एडिंग कोर्सेज इन लिंग्विस्टिक्स टू देयर स्केड्यूल्स, राइट। तो अब जाहिर सी बात है कि वो कुछ अपनी चीजों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं जिनको इंटरेस्ट है। तो अगर वो बढ़ाना चाह रहे हैं तो कंडेंस तो नहीं करेंगे, कंडेंस का मतलब तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सेलरेट का मतलब भी बढ़ाना नहीं होता है, एक्सेलरेट का मतलब होता है उसी कंटेंट की स्पीड को तेज कर देना, ठीक है। प्रोलॉन्ग का मतलब भी बढ़ाना नहीं होता, प्रोलॉन्ग का मतलब होगा उसी कंटेंट की स्पीड को स्लो कर देना, प्रोलॉन्ग कर देना उसको, ठीक है। सप्लीमेंट, हाँ दैट इज अ गुड वर्ड कि उसमें आप कोई एडिशन कर दें, दैट इज व्हाई सी विल बी माय आंसर, ओके। Despite the unfavorable attention brought on by some critics, the press had a dash effect on the campaign overall, ठीक है। तो प्रेस का किस तरह का था भाई, क्या क्या उसका इम्पैक्ट था, ठीक है। तो पहली चीज तो ये समझ लें कि यहाँ पे अगर आपके पास डिस्पाइट लिखा हुआ है तो पहले पार्ट में जो भी लिखा होगा अगले में दूसरे उसका ऑपोजिट होगा। तो डिस्पाइट द अनफेवरेबल अटेंशन ब्रॉट ऑन बाय सम क्रिटिक्स, तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव बात है। तो आगे ब्लैंक में जो वर्ड आना चाहिए, दिस हैज टू बी अ पॉजिटिव वर्ड। तो जो भी ऑप्शन नेगेटिव है वो तो वैसे ही कट जाएंगे। न्यूट्रल ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, कट जाएगा। डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव है, कट जाएगा। इनर्ट अगेन ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो आंसर क्या बचा आपके पास, ए। अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस ऐसे होते हमारे पास जो कि पॉजिटिव होते तो उसमें फिर हम देखने की कोशिश करते कि हमारा आंसर मजीद क्या हो सकता है, ठीक है। ओके, so although Kate's report on her scientific findings, question number 32, although Kate's report on her scientific findings were lengthy, the presentation she held was rather dash, right। तो अब अगेन यहाँ पे सेंटेंस के शुरू में although आ रहा है, ठीक है। तो although के साथ अगर लेंदी लिखा हुआ है तो अगला जो पार्ट होगा वो क्या होना चाहिए, इट हैज टू बी द ऑपोजिट ऑफ लेंदी, व्हिच इज नॉट थॉरो, नॉट मुंडेन, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट रादर brief. That is why the answer is 32. It might have been thorough, it might have been mundane, and it might have been straightforward, but the opposite to lengthy is brief. That is how we solve sentence completion, right? अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें ना इसके ऊपर तो सेंटेंस कंप्लीशन तो इट टर्न्स आउट टू बी लाइक अ गेम, मगर अगेन इसके लिए वोकैबुलरी अच्छी होना जरूरी है। द न्यू बिल्डिंग वाज एक्सपेंसिव, अच्छा ये एक्सपेंसिव नहीं है, वो ई से आता है, ठीक है। एक एक्सपेंसिव होता है मतलब बड़ा, ठीक है, फैला हुआ। इट्स डैश फाउंडेशन अलाउड फॉर वाइडर हॉलवेज देन इट्स प्रेडिसेसर, राइट। तो अगर वो एक्सपेंसिव है तो फाउंडेशन भी उसकी कैसी होगी, बड़ी होगी, शैलो तो नहीं होगी, स्मॉल भी नहीं होगी, थिन भी नहीं होगी। एक ही वर्ड है जो कि क्या है, ब्रॉड, राइट। दैट इज व्हाई C is my answer. Now this is relatively easier because एक ही ऐसा ऑप्शन है जो मेरे आंसर तक पहुंचा है। Athens is remembered by historians as a peaceful society known for its philosophers and scientists, while its neighbor Sparta is remembered for its dash people and focus. So while से ये पता चल रहा है कि the people over that were there in Sparta, they were not philosophers and scientists. So they were not thinkers, they were not great thinkers or researchers. एक और चीज जो हमें ख्याल रखना है वो क्या है कि दूसरे के साथ भी रिमेम्बर्ड लिखा हुआ है, सही है। तो रिमेम्बर तो देखिए उसको किया जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, जो कोई काम करके जाता है। तो काम या तो कोई मेंटली करेगा या कोई फिजिकली करेगा, ठीक है ना। तो मेंटली फिलोसोफर्स थे नहीं, साइंटिस्ट थे नहीं, तो उसका मतलब फिर भी अगर उनको रिमेम्बर किया जा रहा है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई फिजिकल काम किया होगा, ठीक है। तो फिजिकल काम का मतलब क्या है, मार्शल काम। मार्शल का मतलब क्या होता है, उनकी ब्रेवरी, ठीक है, या ऐसा कह लो कि वॉर लाइक, ठीक है। दे वर वॉर लाइक पीपल, दे अचीव समथिंग इन द वॉर्स एंड द बैटल्स दैट डे, ठीक है। ऑब्वियसली नो वन इज, ये उनको कंट्रोवर्सीज की वजह से तो नहीं, दिस इज नॉट समथिंग पॉजिटिव। कंटेंशियस भी नहीं, चिवलरस भी, चिवलरस भी एक अच्छा वर्ड है,
शिवलरी बेसिक एटिकेट्स को कहते हैं, जो खासतौर से जेंटलमैन के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑपोजिट बन रहा है ना वो मार्शल बन रहा है, ठीक है। Okay, so question number 35. The storm dashed our efforts to hold a company picnic in the park last week because it was impossible to stay outdoor in such a dash, right? तो अब storm ने क्या किया? जाहिर सी बात है कि अगर वो कह रहा है impossible to stay outdoors और storm भी था, right? तो हमारे जो एफर्ट्स थे उसको उन्होंने क्या किया होगा, रोका होगा ना, कम किया होगा। तो पहला जो वर्ड है उसमें कुछ कम करना आना चाहिए। तो बोल्स्टर का मतलब तो सपोर्ट है, तो स्टॉर्म ने सपोर्ट तो किया नहीं होगा बाहर जाने को, ना ही इंक्रीज किया होगा चांसेस को, या तो डिस्ट्रॉय किया होगा या थॉट किया होगा, ऐसा ही है ना। तो डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय का मतलब ये होता है कि खत्म कर देना, और थॉट का मतलब होता है किसी चीज को ब्लॉक कर देना, ठीक है। थॉट का लिटरल मीनिंग है किसी चीज को ब्लॉक कर देना, ठीक है। तो अब ये दूसरे ब्लैंक के हिसाब से हम देखेंगे। स्कॉलर का मतलब होता है टू व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डर्टी, राइट? स्कॉलर इज व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डर्टी। एंड डाउनपोर ऑब्वियसली जब कोई बहुत तेज बारिश हो जाए तो उसको डाउनपोर कहते हैं। तो इन सच अ डर्ट मतलब बिकॉज वहां पे डर्ट थी या गंदगी थी इसलिए नहीं, तो क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी इसलिए उनको रोका जा रहा था। एंड दैट इज व्हाई बेटर आंसर विल बी ऑप्शन C. Okay, so the two rich cousins were very similar to each other in their dash lifestyles. Both spent money freely and ostentatiously displayed the dash of their homes to their less wealthy neighbors. तो एक तो ये है कि ऑब्वियसली बात है कि अगर वो रिच थे तो लाइफस्टाइल कैसा होगा उनका? अच्छा होगा ना, यानी बहुत ही जबरदस्त किस्म का, और लोगों को यानी दिखा रहे हैं, अगर वो तो कुछ होना भी चाहिए दिखाने के लिए ना, यानी इट हैज टू बी गुड, राइट? तो वो स्टिंजी तो होगा नहीं, कंजूस भी नहीं होगा, ऑस्टेयर भी नहीं होगा। ऑस्टेयर का मतलब क्या होता है? ऑस्टेयर का मतलब होता है, ऑस्टेयर का मतलब क्या होता है? ऑस्टेयर का मतलब होता है स्टिंजी एंड स्ट्रिक्ट अगेन, राइट? और फ्रूगल भी नहीं होगा। फ्रूगल का क्या मतलब होता है? फ्रूगल का मतलब भी माइजरली होता है टू सम एक्सटेंट, राइट? तो ये भी नहीं होगा। जो हमें समझ में आ रहा है वो तो ये होगा कि भाई वो बहुत शो ऑफ कर रहे थे, तो दे हैव टू बी lavish, right? They have to be lavish. So they cannot be frugal, they cannot be, तो पहले ही ब्लैंक की बेसिस के ऊपर ये फैसला हो गया कि आपका आंसर ए होगा। ऑप्युलेंस भी कहते हैं इस वेल्थ को, ठीक है। displayed the opulence of their homes, मतलब बहुत ज्यादा उनके पास जो वेल्थ थी उसको उन्होंने डिस्प्ले किया। दैट इज व्हाई द आंसर विल बी ए। और दोनों को प्लग इन भी अगर हम कर लें तो भी हमारा इट इज मेकिंग परफेक्ट सेंस। in their lavish lifestyles and displayed the dash of their homes to their less wealthy neighbors. Okay, so guys, now let's move on to the poem comprehension. So this is, we have 3 poems in this test, and this is the first one. This is the laburnum top, right? So this poem थोड़ा सा summarize कर दूं पहले ये है किस बारे में, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चों को अक्सर पोएट्री में प्रॉब्लम हो रही होती है। And this is basically, the laburnum is a tree. It's a special type of a tree that has, you know, greenish yellow leaves, and it's a very dense tree, right? And then there is a goldfinch, right? That is a bird. And this entire poetry and this entire poem is about the relationship of that tree, right, and the bird, right? And the poem talks about the time when, you know, the bird lives on that tree, and you know the bird feeds its young ones on the tree, and you know, as soon as जब वो चली जाती है वहां से, जब वो बच्चों को अपने उस ट्री के ऊपर फीड कराती है और सारा उनकी वो लाइफ एक वहां पे है, और जब वो सुबह चली जाती है वहां से, तो जो बर्ड है वो चली जाती है, तो फिर वो ट्री जो है वो इट इज ऑलमोस्ट एज इफ इट वाज नेवर अलाइव, राइट? और जब वो बर्ड वहां पे होती है और अपने बच्चों को फीड करा रही होती है, तो इट इज लाइक इट इज अलाइव एंड हेल्दी एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? सो दिस इज व्हाट द पोएम इज mainly about. So we have 3 questions that is pertaining to it. 2 of them are related to the meaning of that poem, right? And one of it is related to the literary technique. So we'll try and solve all these 3 questions. Well, the first one was very easy, question number 37.
what is described by the word sleek in the poem? Now, if you read it, then sleek as a lizard. Now it's very clear over here that sleek is being used for lizard, and that is why the answer to question number 37 is A, apple, right? It's not for a bird, it's not for a branch, and it's not for the top of the tree. We read question number 38. What does the phrase the bird face identity means, right? देखें, जो एसेंस है ना पोम का वो ये है कि the life of the bird is with the life or the presence of that, I'm sorry, the life of the tree is with the presence and the life of that bird जो वहां पे रहती है और अपने बच्चों को वहां पे फीड कराती है, राइट? तो वो जब चली जाती है तो the tree is almost as if it was always dead, right? So the bird face यहाँ पे जो आपके पास बन रहा है ना, she stokes it full and then flirts out to a branch end, showing her bird face identity mask, right? तो अब यहाँ पे क्या मतलब बन रहा है इसका? Because she was brown in color? No, that has nothing to do with the face. Bird means to stop. Due to her dark colored yellow body, again it's the same thing. It's not none of the above. Bird's face became her identity and a symbol of recognition because it was the bird that was making her the entire tree look alike, right? Now 39 is about the literary technique. What instance of alliteration has been used in the poem? The laburnum top out of the following options. अब देखें दो चीजें समझ में इसके अंदर. पहली चीज तो ये कि alliteration का मतलब होता है कि जब similar sounds की repetition हो जाए, और ये similar sounds की repetition भी normally जब consonants में होती है, यानी the words that are other than the five vowels, the letters that are other than the five vowels, उनके अंदर जब repetition होती है similar words की, तो similar letters की इनफैक्ट या similar sounds की, similar syllables की, तो उसको आप alliteration कहते हो. तो out of the four options that we have only option D, वहां पे हमें ये repetition मिल रही है. September sunlight, तो repetition is from the letter S. S consonant भी है और इसकी यहाँ पे हमें repetition भी मिल रही है. That is why the answer to question number 39 will be option D. Okay, so now we'll be moving on to the other poem that we have, and that is Mother to Son. Now this poem, I'll summarize it again. ये जो poem है इसके अंदर first there's यानी इसको summarize अगर मैं करूँ तो there's a mother who is talking to her son, obviously. और पहले the mother is talking about the difficulties and the struggles that she has gone through in life, and then the mother is talking about the problems that the child may also face in life, and then the mother is motivating the child, right? That you should never give up and you should always stand up again. Once go through pain and turmoil, you should get back up again. Okay, that is what the mother is motivating the child for, right? So that is the summary of the poem, right? Now the questions, if you look at the questions in the mother to son, the mother compares her life to, it's very clearly written over here, life for me ain't mean no crystal stair. Okay, so she is comparing her life to a staircase, not a journey, not a road, not a river. The mother tells her son very clearly over here where there ain't no light. So boy, don't you turn back, don't you sit down on the steps, because you find it's kind of hard, but don't you fall now. I see still going, honey. It's still, I see still climbing, a life for me ain't no. तो ये वहां पर उसको बता रही है, मोटिवेट कर रही है कि अगर प्रॉब्लम होगी और प्रॉब्लम होगी तो you don't have to go down, you have to get back up, right? तो no, she is not telling to be more carefree, not to fall in love, ये भी नहीं कह रही, to make more money, ये बात भी नहीं हो रही, not to give up, ये बात बिल्कुल definitely हो रही है, ठीक है? The mother's tone can be best described as, देखो motivating tone है, so it cannot be harsh. Motivating tone है, it cannot be fearful, because if she is herself fearful, how can she motivate her child? And it cannot be indifferent, because indifference is when you do not have any feeling towards the guy you are talking to, right? So अपने son से अपने बेटे से बात कर रही है, she has feeling, right? So she's kind but she's firm, right? Because she wants to give her child the actual lessons of life. And if she's only kind, she cannot do that. That is why the answer to question number 42 is C. Which of the main type of figurative language is used in the poem? Now, because hyperbole is exaggeration, right?
and we don't see any exaggeration over here, बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को बताना. Simile is a comparison, metaphor is a comparison, personification is when you give a human attribute to a non-human, right? And that these two are categorically not present over here. Comparisons are there, but देखो simile भी comparison है, metaphor भी comparison है. Simile is a comparison that uses like or as, and metaphor is without like or as, right? तो यहाँ पे comparison हुआ है और बगैर like और as के हुआ है, so we can be sure to say that the answer to this question can be B, metaphor. Okay, so this is sonnet 43. How do I love thee? We only have two questions from this poem, right? The first question, number 44, says, what does the speaker count in this poem? So, अगर आप इसको देखें, तो ये it is just counting the ways in which, you know, that is going on, right? So, I love thee freely, I love thee purely, I love thee with the passion to put. So, he or she is counting the ways, you know, he or she loves the person being addressed to, right? That is why the answer to it is option C. और क्वेश्चन नंबर 45 पे अगर आप आ जाएं तो इसके अंदर राइम स्कीम का पूछा हुआ है. देखिए राइम स्कीम निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है, और राइम स्कीम निकालने का तरीका ये होता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है, यानी यू हैव टू सी के जो लास्ट वर्ड्स हैं उनकी जो साउंड है वो कहाँ कहाँ मैच करती है. तो जो पहला जो वर्ड होता है उसको हम ऑटोमेटिकली हम ए कह सकते हैं, और अब जो जो इससे मैच करेगा वो भी ए होगा, जो नहीं करेगा वो बी हो जाएगा, जो उन दोनों से नहीं करेगा वो सी हो जाएगा. दैट इज द वे टू टेक आउट द राइम स्कीम, राइट? अब बेस लिखा हुआ है, हाइट इससे राइम नहीं करता तो हाइट विल बी बी. साइड हाइट से राइम करता है तो दिस विल बी बी अगेन. एंड ग्रेस वेस से राइम कर रहा है तो दिस विल बी ए. एवरी डेज वेस से राइम कर रहा है दिस विल बी ए. लाइट हाइट से राइम कर रहा है दिस विल बी बी. राइट लाइट से राइम कर रहा है और वाइट से भी राइम कर रहा है, दिस विल बी बी. प्रेज वेस से राइम कर रहा है, दिस विल बी ए. एंड अब ये यूज से फिर चेंज हो रहा है, यूज से फिर ये दोनों से राइम नहीं कर रहा तो ये सी हो जाएगा. क्वेश्चन लेकिन ये है, हमें एंड तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइंस ऑफ द पोएम इज ए बी बी ए. व्हाट, ये हमने निकाल लिया अभी ए बी बी ए. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द नेक्स्ट 4 लाइंस? तो नेक्स्ट 4 लाइंस हमने निकाली हुई हैं ए बी बी. I'm sorry, this is the 4th line ना, तो यहाँ से हम निकालेंगे A. This is the 5th line, this is the 5th line, this is the 6th line, 7 and 8, right? So this is A, B, B and A. So this is the answer. Option C is the answer to our question. And alhamdulillah, this was the discussion of GT7. Hope this will help you guys, inshallah. ठीक है? कोई क्वेश्चन अगर ना समझ आए तो आई वुड रिकमेंड दैट यू गो बैक विद द एक्सप्लेनेशन अगेन, एंड होपफुली अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का मसला हुआ है तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.